learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and we are still doing the chapter Balance of Payments. Okay, so again a very quick revision here. जितना मैंने पढ़ा दिया था उसको मैं फिर से एक बार आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, just आपका confusion ना हो. This is the whole thing of balance of payment. Okay, यही पूरा structure है, यही पूरा account है balance of payment. This is what? This is the visible items. Okay, जो economic transactions हमने पढ़ा था. Okay. This is invisible items क्योंकि ये services हैं. Okay, these are one way transaction या unilateral आपको लिखा ही हुआ है यहाँ पे. Okay, एंड इसमें छोटी मोटी इनकम एंड रेंट एंड इंटरेस्ट भी आ जाता है. ठीक है, तो विजिबल आइटम्स को अगर हम खाली स्टडी करेंगे, दैट इज गुड्स के बारे में जब हम बात करेंगे, दैट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड. और बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि वो बैलेंस भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है. उसका मैं एक्चुअली आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, जब हम इन तीनों को ले लेते हैं, विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल. ओके, सो व्हेन वी कंबाइन ऑल दिस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, दिस इज योर टोटल करंट अकाउंट. Okay, and current account can also be balanced, surplus or deficit. Okay, now very quickly what I'm going to say here, अब इसके बाद जो आता है आपका वो आता है कैपिटल अकाउंट. ओके, ये आपका कैपिटल अकाउंट, ये टोटल पूरा जो है यहाँ से आपका ये पूरा जो है, दिस इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये पूरा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट है. राइट, फाइन हियर, आई होप नाउ इट्स क्लियर. Now, for example, in case of deficit in current account, अगर current account में क्या है, deficit आ रहा है. In case of current account के balance में, मैं बता ही दे रही हूँ आपको, फिर अभी मैं notes भी दूंगी. Right? So if there is a deficit in current account balance, then what happened? That is, debit is more than the credit. Debit ज्यादा है आपका और credit आपका कम है. Okay, then in this case we can borrow or invest. यहाँ से हम क्या करेंगे, पैसा ले लेंगे, इसमें से बोरोइंग कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट कर देंगे फ्रॉम अब्रॉड, तो पैसा हमारे पास आ जाएगा. सो इट विल बी रिकॉर्डेड हियर इन द क्रेडिट साइड. ओके, वी कैन बोरो और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड अगर डेफिसिट है. राइट, देन द नेक्स्ट इज हियर व्हाट, दैट इज इफ इन केस ऑफ सरप्लस इन करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट का क्या आ गया, आपका बैलेंस सरप्लस आ गया, ये सरप्लस आ गया, ये डेफिसिट आ गया, इसका बैलेंस. देन व्हाट हैपेंस हियर, इट मींस द क्रेडिट इज मोर. यहाँ पे जो क्रेडिट आइटम में इनफ्लो ज्यादा हो गया, तभी आपके पास पैसे ज्यादा आ गया है. इनफ्लो इज मोर देन द डेबिट साइड, दैट इज द सरप्लस. ईदर द बैलेंस कैन बी यूज्ड टू लेंड और टू इन्वेस्ट, और उस पैसे को हम क्या करेंगे, लेंड कर देंगे या इन्वेस्ट कर देंगे जब इधर का ज्यादा आ जाएगा. राइट, देन टू इन्वेस्ट टू अब्रॉड, कॉज करंट अकाउंट हैज टू बी बैलेंस्ड. ओके, करंट अकाउंट को बैलेंस्ड होना जरूरी है. ओके, तो कैपिटल इसीलिए ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले. Okay, then if third condition क्या, if balance of current account cannot be borrowed or investment, अगर ऐसी कोई कंडीशन आई जहाँ पे करंट अकाउंट में ना आपका इन्वेस्टमेंट हो पा रहा है, ठीक है, ना लेंडिंग ही हो पा रही, ना बोरोड हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है, देन व्हाट हैपेंस हियर, रिजर्व अब चलेगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिजर्व का काम होगा. मैं एक समरी पार्ट आपको बता रही हूँ, ये सब अभी मैं आपको डिटेल में रीड कराऊंगी. राइट, so reserve will be created. Okay, with that, withdrawal from exchange reserve will be done or addition to foreign exchange reserve will be done. Okay, so this was the whole thing. And one more thing I would like to tell you here, just before that, let me rub this also. Okay, तो इतना आपको समझ में आ गया. टोटल ये जो बना है यहाँ पे चार्ट, दिस इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट, और यही पूरा चैप्टर है आपका, इसी के अकॉर्डिंग पूरा चलना है. करंट अकाउंट क्या है, एक पार्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कैपिटल अकाउंट, ये सब, ये टोटल पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है. ठीक है, और बीओटी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का. राइट, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, लेट्स सी द करंट अकाउंट. आई थिंक मैं करंट अकाउंट कर रही थी. राइट, सो यहाँ पे डिफरेंस है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट का. Now, current account refers to an account which records all the transactions relating to export and import of goods, okay, and services and unilateral transfers during a given period of time. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. components of current account मैंने ये भी आपको बता दिया. विजिबल ट्रेड होता है गुड्स का, इनविजिबल ट्रेड आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता है, वन साइडेड ट्रांजेक्शन, दैट इज यूनिलैटरल ट्रांजेक्शंस,
or unrequited transfers. Okay, then current account shows the net income as it's record all the actual transactions of goods and services which affects the income, output, employment of a country. It shows the income generated in the foreign sector. Now balance of current account क्या होता है? If the net value of current credit and debit balance is the balance on the current account, right? यही चीज मैंने आपको बताई थी कि if there is a surplus ज्यादा आ रहा है आपका, then it arises when credit items are more than the debit items or when the value of exports are more than imports. It signifies nation is the lender to rest of the world. लेंडर बन सकता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और इंडिकेट्स नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. करंट अकाउंट वैसे डेफिसिट कब होगा? व्हेन द डेबिट्स आइटम्स आर मोर देन द क्रेडिट आइटम्स, व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स. ठीक है, एक्सपोर्ट्स आपकी कम है तभी तो ये आपका डेफिसिट आ रहा है. इट सिग्निफाइज नेशन इज अ बोरोअर, आपको लेना पड़ रहा है पैसा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट इंडिकेट्स नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ओके, देन हियर बीओटी वर्सेस करंट अकाउंट. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? एक ओनली विजिबल आइटम इसमें रिकॉर्ड करते हैं और इसमें बोथ विजिबल एंड इनविजिबल. ओके, और यूनिलैटरल भी आ जाएगा. ये नैरो कॉन्सेप्ट है और ये क्या है आपका वाइडर कॉन्सेप्ट. ओके, now the next is your capital account. It records all the transactions between residents of the country and rest of the world which causes a change in the assets or liabilities of the residents of the country. अब capital account में क्या होगा? Changes आएंगे assets and liabilities में. And its government, इट इज रिलेटेड टू क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन पर्पस क्या होता है कैपिटल अकाउंट का? कि जो भी आपका करंट अकाउंट आपने क्रिएट करा है उसमें सरप्लस या डेफिसिट आता है. ओके, फाइनेंस डेफिसिट, अगर उसमें कुछ कमी है, उसको पैसा चाहिए तो ये कैपिटल अकाउंट से लिया जाएगा. ओके, और अगर सरप्लस आ गया तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा. ओके, रिजर्व्स वो जो मैंने आपको बताया था उस तरह चलेगा. कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट: बोरोइंग्स एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड. बोरो करेंगे फ्रॉम अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव, दैट इज द क्रेडिट साइड. जब हम बोरो करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, राइट. लेंडिंग टू अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड. लेंडिंग मतलब जब हम दूसरे को पैसा दे रहे हैं तो वो जा रहा है. ओके, आउटफ्लो ऑफ मनी. देन इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम द अब्रॉड. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स बाय rest of the world in shares of Indian companies, real estate in India recorded on the positive side. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं इन शेयर्स recorded on the positive, that is the credit side, as they bring in foreign exchange. Okay, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ. Investments by Indian residents in shares of foreign companies, real estate abroad recorded on negative side. Okay, तो आई होप इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं, बस वन वन लाइन का है ये. इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं. एक होता है एफडीआई, दैट इज जहां पे आपको फुल कंट्रोल मिल जाता है. ओके, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, फॉर एग्जांपल लैंड ले लिया, बिल्डिंग ले ली, उस पर फुल कंट्रोल है. वेयर एज इन the next is portfolio investment, or it is also known as FII, that is the refers to purchase of an asset but no direct control, or the purchase of share is an example. Okay, तो FII बेसिकली क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. ओके, यहाँ पे क्या है आपका? ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. नाउ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो मैंने आपको बताया था, these are the financial assets of the government held by the central government. The reserves are created by the central government. Any withdrawal from the reserve is recorded on the positive side. कोई भी विड्रॉल अगर हम करते हैं, विड्रॉ करते हैं हमारा, तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और एडिशन जो होगा वो डेबिट साइड पे आएगा, राइट. नाउ हियर व्हाट दे हैव, सरप्लस. अगर सरप्लस होता है इन कैपिटल अकाउंट अराइजेस व्हेन द क्रेडिट आइटम्स आर मोर. ओके, जब भी आइटम्स आपके क्रेडिट के मोर हो तो सरप्लस होगा, डेफिसिट तब होगा. ये तो सब तीनों में यही केस है. इन कैपिटल अकाउंट अराइजेस व्हेन डेबिट्स आइटम्स आर मोर credit items. Okay, then balance on current account versus balance on capital account. The balance on current account and the balance of capital account are interrelated in accounting sense. Here current account plus capital account should be equal, it should be zero, sorry. Okay, if an economy is facing situations of current account deficit, अगर current account में deficit है तो it will be a financing through the surplus in capital account. Capital account के surplus से ही वो finance होगा. And if there is a deficit, economy is facing surplus, current account surplus, it will be matched by the deficit on the capital account. Okay, vice versa. Now your difference between current account and capital account. Current account में क्या आएगा? Transactions bring a change in the current level of the country, influencing on the economy, whereas capital transaction bring about a change in the capital stock of the country. यानी कि stock सबसे end में आता है, right? इसको stock concept है ये. Then concept is a flow concept. It's a capital account. आपको क्या है? Stock concept है, because it is included all items expressing changes स्टॉक. ओके, लास्ट एट दैट मोमेंट, लास्ट में होता है, राइट. कंपोनेंट्स क्या है? करंट अकाउंट में विजिबल है, इनविजिबल है, ट्रेड है, यूनिलैटरल है.
and capital account borrowings and lendings to and from abroad, investments and change in foreign exchange reserve. Okay, and the last is here we have बेसिस क्या है आपका ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेट आइटम्स ओके मीनिंग इसका देख लिया ऑटोनोमस आइटम्स रिफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव यानी कि उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है इसीलिए वो ट्रांजैक्शंस होते हैं इंटरनेशनल ओके देन अकोमोडेटिंग आइटम्स रिफर्स टू द ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकिंग टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस इनमें अगर डेफिसिट अगर आ रहा है या सरप्लस आ रहा है तो उसके लिए अकोमोडेटिंग आइटम्स रखे जाएंगे then BOP account में क्या autonomous transactions are independent of the state of BOP account and accommodating are undertaken to maintain the balance in BOP account. Then आपका क्या autonomous transaction take place on both current and capital account दोनों पे आ जाएंगे और ये सिर्फ आपका किस पे आएगा capital account में that is accommodating items. Then इसके अलग alternate names भी हैं above the line items it is also known as autonomous items and accommodating items it is also known as below the line. Okay. Then last is deficit in balance of payments account arises when total inflows on account of autonomous transaction are less than total outflow on account of such transactions. Okay. And on the other hand, surplus in balance of payment account arises when total inflows, the total inflows are on account of arises when total inflows exceed total outflows. Okay. In short. Now, the last thing what I would like to tell you here in short दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या होता है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट आपका मैं इसी पे बता देती हूँ स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट आपका ये पूरे में है बैलेंस ऑफ ट्रेड बिकॉज इट इंक्लूड्स ओनली गुड्स ओके दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स गुड्स का बताते हैं और इससे आपका क्या है सेकेंड नंबर पे आपका आता है करंट अकाउंट बिकॉज इट इंक्लूड्स गुड्स देन सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ओके एंड इससे बिगर क्या होता है इट इज ग्रेटर देन सबसे बड़ा क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकॉज इट इंक्लूड्स व्हाट आपका ये आ जाता है गुड्स भी करेगा इंक्लूड सर्विसेज भी करेगा यूनिलेटरल भी करेगा एंड कैपिटल अकाउंट भी करेगा फिर सबसे बड़ा कैपिटल अकाउंट नहीं है रिमेंबर दिस द स्मॉलेस्ट इज बीओटी देन आफ्टर दैट करंट अकाउंट and then the biggest one or the wider concept is balance of payment. With this we come to the end. Hope you like it. Please do like, share and subscribe. Follow for more. Thank you.